The question is saying to find out MON. The requirement of the question is to find out MON. So MON is this angle. Look, MON. जो मिडिल अल्फाबेट होता है उसमें एंगल फॉर्म हो रहा होता है MON. So middle alphabet is O. The angle is over here. This is the angle we have to find out. This is the angle we have to find out. तो जो एंगल हमें फाइंड करना है इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने x लिख दिया. अब देखें इसको कैसे फाइंड करेंगे. If you see, this line and this line is same. The length of this line and the length of this line is same. This double dash is telling you that these two lengths are equal. Equal length का मतलब है कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर. अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी. अगर ये 5 है तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगी. Both lengths are equal. So actually this is an isosceles triangle. Isosceles triangle is that triangle which has two equal sides, and two equal sides make the two angles also equal. ठीक है, तो इसके अंदर ये जो एंगल है this one and this one, these two angles will be of same value. ठीक है, देखिए ऐसा isosceles triangle में इस तरह होगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज एन isosceles triangle. तो इसकी ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा. इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा उसको रोटेट कर दें और हम कहें कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल. इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं एंड आई एम सेइंग दैट दिस एंगल, दिस साइड एंड दिस साइड इज सेम, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. ठीक है, सो बेसिकली जिस पॉइंट पर दो सेम साइड्स मीट कर रही होती हैं इस वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस एंगल. if we observe here we have a 90 degree angle. You can see ये 90 degree angle है. ठीक है, ये 90 degree angle है, यहाँ पर भी 90 degree angle है. and the question is telling you that this is a straight line, right? This is a straight line, right? Now also the question is saying that this is a transversal कहते हैं उस लाइन को जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, कट कर रही होती है. ठीक है, सो इससे हमें पता चला कि AB and CD are two parallel lines. The question is not using the word parallel. Question parallel का word use नहीं कर रहा, लेकिन because it is mentioning that transversal XY, तो transversal का word हमें ये बता रहा है कि ये XY वो लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है. So obviously transversal exist where there are parallel lines. अगर parallel lines नहीं होंगी तो transversal भी नहीं होगा. ठीक है, so if transversal is there, it means all the rules of corresponding angle, interior angle and alternate angles will exist. So see, this line is parallel and this line is also parallel, so we can see there is a Z forming. ये Z बन रहा है, right? And this angle is 31, so this angle over here will also be 31, right? So look, this angle will be 31. Same thing over here, this angle will also be 31. Now this over here is a 90 degree angle. You can see this and this. This is a 90 degree angle like this. ये 90 degree angle है, इसमें से ये वाला पार्ट 31 है, तो 90 में से हम 31 को माइनस कर देंगे. 59 is this angle, right? ये एंगल क्या हो जाएगा 59. Now if the angle on the right is 59, the angle on the left will also be 59 because these two angles are equal. As we discussed, this is an isosceles triangle. ये एक isosceles triangle है, तो इसका अगर एक एंगल 59 है, so the angle on the left will also be same and it will also be 59. Now focus on this triangle. We have all three angles of this triangle
The triangle is something like this, in which we have got to know this angle, which is 59. This angle is also 59, and we are required to find out the angle x. So 59 plus 59 plus x, the sum of three angles inside a triangle is always 180. This is an equation. By solving this equation, we will get to know the value of x. So 50 and 50 is 100. So this is 118. 118 shifted on the opposite side will become minus. So x will be equals to 180 minus 118. This will become 80 minus, this will be 62. So the value of x, or the value of MON, is 62.